Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture 23 of our lecture series. In today's lecture, we will talk about the Fourier transform. In few previous lectures, we have talked about Fourier series, how to determine the coefficients of Fourier series, the convergence issues of Fourier series, some properties of Fourier series, and topics like that. So that was basically chapter 3 in your book, Signaling System by Oppenheim. And today we are going to start chapter 4 of your book, which is about the Fourier transform. So let's start today's lecture. Okay, we have seen in the previous lectures that the Fourier series is extremely useful signal representation, and it is beneficial for the analysis of our signals and system. However, there is one drawback, and the drawback is that the Fourier series can only be used for those signals which are periodic, which repeat themselves. But in real life, we have many signals which are not periodic, which are aperiodic, which do not repeat themselves. So what to do about those signals which are aperiodic? Because Fourier series cannot does not give us any representation for those signals which are aperiodic. Fourier series को यूज करते हुए हम सिर्फ उन सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो पीरियाडिक सिग्नल्स हों, लेकिन लार्ज क्लास ऑफ सिग्नल्स चूँकि अपीरियाडिक होते हैं तो फोरियर सीरीज़ की जो टेक्निक है वो उन सिग्नल्स के लिए यूज़ नहीं की जा सकती. Although it is still very useful, but it only applies to those signals which are periodic. Lekin what to do if a signal is periodic, which a large class of signals are in fact aperiodic? So what to do for aperiodic signals? So instead of abandoning this Fourier series technique, what we can do that we can somehow use this representation for aperiodic signals as well. And how we can use that, basically today in we will discuss this thing in the coming slides, that we use a technique that we increase the time period of the signal, and when t approaches infinity, then we can use that Fourier series representation for more general signals which are basically aperiodic in nature. So as a limiting case, when t tends to infinity, our aperiodic signal looks exactly similar like a periodic signal whose time period t is at capital T is infinity. So this more general representation, which can be used for aperiodic signal, and it can also be used for periodic signals. So this is more general representation, and this general representation is called Fourier transform. So just to summarize, ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो ये है कि फोरियर सीरीज के थ्रू हम सिर्फ पीरियाडिक सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपीरियाडिक सिग्नल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सो जब हम अपीरियाडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी इसी टेक्निक को, फोरियर सीरीज की टेक्निक को थोड़ा सा चेंज करेंगे, और वो जो चेंज होगी वो हमें इनेबल करेगी, वो हमें इस काबिल बनाएगी कि हम अपीरियाडिक सिग्नल के लिए भी एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर सकते हैं. वो जो अपीरियाडिक सिग्नल के लिए इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन, एंड दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट ओनली बी यूज्ड फॉर अपीरियाडिक सिग्नल, इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पीरियाडिक सिग्नल. सो इट इज़ मोर जनरलाइज्ड थिंग जिसको आप किसी भी टाइप के सिग्नल के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस कि टेक्निक बेसिकली है क्या और किस तरह से हम फोरियर सीरीज से फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिराइव कर सकते हैं, या किस तरह से हम ऐसे सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो aperiodic. So this is an example which you have already seen. This is पीरियाडिक स्क्वायर वेव, और इसके हमने कोफिशिएंट कैलकुलेट किए थे एग्जांपल 3.5 के नाम से, ये आपकी बुक में है और हमने लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था. सो दिस इज अ पीरियाडिक स्क्वायर वेव विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम
टाइम पीरियड कैपिटल टी. सो ये इसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी. सो इट विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर कैपिटल टी or 2t or 3t or 4t and so on so forth, and similarly for minus t, minus 2t, minus 3t. So this is a periodic square wave which repeats itself after every capital T. वो कैपिटल टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 सेकेंड भी हो सकती है, 10 सेकेंड भी हो सकती है, 50 सेकेंड भी हो सकती है, बट इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी कैपिटल टी. नाउ ये डिस्कस तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, लेकिन लेट्स सी कंसेप्चुअली इस चीज़ को देखेंगे. इसका जो टाइम पीरियड है टी, अगर हम इसको इंक्रीज करना शुरू कर दें तो क्या होगा कि ये जो इसकी अकरेंसेस हैं ये इस वाले सिग्नल से दूर होती चली जाएंगी. मसलन इस वक्त अगर टी फॉर एग्जांपल आपके पास 5 सेकंड है तो ये सिग्नल 5 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, या -5 पे भी इसकी एग्जिस्ट करता है, फिर 0 पे है, फिर 5 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट करता है. अगर इस टी को मैं 5 के बजाय 10 कर दूं तो यू विल एग्री कि ये जो इसके दो अकरेंसेज हैं और बाकी सारी भी, ये इस सिग्नल से ज़्यादा दूर हो जाएंगी. मसलन ये किस जगह पे चली जाएंगी, ये इस जगह पे चली जाएंगी जहाँ पे अब इसकी सेकंड अकरेंस है. तो इसको इंक्रीज़ करने से, टी को इंक्रीज़ करने से ये दोनों जो अकरेंसेज हैं इसकी इससे ज़्यादा दूर चली जाएंगी. अगर मैं टी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँ तो फिर ये और ज़्यादा दूर चली जाएंगी. एंड व्हाट विल हैपन इफ टी इज इक्वल, इफ आई सेलेक्ट कैपिटल टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. इफ आई सेलेक्ट कैपिटल टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सो इट मीन्स के मेरे पास इस फिनाइट टाइम डोमेन के अंदर सिर्फ यही वाली अकरेंस मौजूद होगी और आपको यहाँ पे इस डोमेन में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये अपने आप को अब रिपीट कर रहा है टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे या t इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे. सो इन दैट लिमिटिंग केस, जब हम t को इन्फिनिटी चूज कर लेते हैं तो दिस सिग्नल विल लुक लाइक एन aperiodic सिग्नल बिकॉज इट ओनली हैज अ सिंगल अकरेंस इन द फिनाइट डोमेन, और इसकी जो और कोई अकरेंस अगर है भी सही तो वो t इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी पे है या t इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे है. सो इन दैट लिमिटिंग केस दिस पीरियाडिक सिग्नल विल बिकम ए पीरियाडिक, और उस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगी फोरियर सीरीज की, लेट्स सपोज जो रिप्रेजेंटेशन उस लिमिटिंग केस के लिए है व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन. सो कंसेप्चुअली ये बात जो है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है. फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअली आप इस चीज़ को समझ लें कि किसी पीरियाडिक सिग्नल को जो अपना टाइम, किसी टाइम पीरियड कैपिटल टी के बाद अपने आप को रिपीट करता है, अगर आप उसका टाइम पीरियड इंक्रीज करना शुरू कर दें तो क्या होगा कि इसकी ये जो नेक्स्ट अकरेंसेज हैं ये इस वाले से दूर होती जाएंगी. And in limiting case, when this t tends to infinity, so this periodic signal becomes aperiodic. और उस वक्त जो भी आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है, that representation is called Fourier transform representation. So इस पीरियाडिक स्क्वायर वेव के लिए हमने कोफिशिएंट्स डिटरमिन किए थे उस एग्जांपल 3.5 में, एंड दे वर दिस: ए के वाज 2 sin k ओमेगा नॉट t1 डिवाइडेड बाय k ओमेगा नॉट t. नाउ वी डू समथिंग ओवर हेयर. हम t को इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल बिकम t a k, एंड हेयर we assume that k omega naught is basically some multiple of fundamental frequency. Omega naught was our fundamental frequency. So k की वैल्यू चूँकि ज़ाहिर है इंटेजर है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, कोई भी इंटेजर वैल्यू है, तो k omega naught is some integer multiple of that fundamental frequency. So let's this k omega represent this k omega naught as omega. Instead of writing it k omega naught, we write k omega naught as omega. So it will become 2 sin omega t1 डिवाइडेड बाय ओमेगा, बिकॉज के ओमेगा नॉट इज ओमेगा और t को हमने उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया. सो फॉर ओमेगा, assuming that omega is equals to k omega naught, we can write this tak like this: 2 sin omega t1 over omega, and this is known as an envelope function. What is that envelope function? We will discuss it on the next slide.
Okay, so this is basically an envelope function. So these Fourier series coefficients जो इस periodic square wave के आपको मिलते हैं, they are samples of this envelope. मसलन for example ये a0 है, ये a-1 है, ये a1 है, इसी तरह से ये a2 है, a-2 है, a3 है, a-3 है, for some fixed t की कोई वैल्यू जो है वो आपने चूज़ की तो उसके लिए आपके पास ये उसके कोफिशेंट्स आ रहे हैं, और इन कोफिशेंट्स को अगर हम जॉइन कर दें तो दिस बिकम्स समथिंग विच इज़ नोन एज अ सिंक फंक्शन। ये सिंक फंक्शन को भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। सो दिस इज़ अ सिंक फंक्शन। नाउ व्हाट हैपन्स कि इफ़ वी आर इंक्रीजिंग टी, अगर हम टी को इंक्रीज करते जाएं तो दीज सैम्पल्स, दीज Fourier coefficients they occur more closely। जैसे यहाँ पे मसलन ये वाला a0 था, ये वाला a1 इससे इतने डिस्टेंस पे था, बट हेयर डिस्टेंस बिटवीन a0 एंड a1 इज लेस, सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन a1 एंड a2 लेस। सो आप जैसे ही t को इंक्रीज करेंगे तो ये जो इन्वेलप है, ये जो इसके कोफिशेंट्स हैं Fourier रेक्टेंगुलर पीरियाडिक स्क्वायर वेव के जो कोफिशेंट्स हैं, दे विल बी मोर क्लोजर टू ईच अदर, जैसे जैसे आप टी इंक्रीज करते जाते हैं। सो ये टी जो है कैपिटल टी की वैल्यू इस वाले केस से ज़्यादा है, ये वाला जो है इसकी वैल्यू इस वाले से भी ज़्यादा है। सो यहाँ पे हमने और ज़्यादा कैपिटल टी को इंक्रीज किया है तो ये सैम्पल्स जो हैं वो और जो है वो आपस में क्लोज हो गए हैं। एंड सिमिलरली व्हेन टी बिकम्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये सैम्पल्स इतने क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के कि दिस almost becomes a continuous function of frequency। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। मसलन इस फ्रीक्वेंसी पे आपके पास एक वैल्यू मौजूद है, इस फ्रीक्वेंसी पे एक वैल्यू मौजूद है, इस फ्रीक्वेंसी पे एक वैल्यू मौजूद है, बट इन बिटवीन देयर इज़ नो वैल्यू। लेकिन जब आप टी को इंक्रीज करते हैं तो ये सैम्पल्स एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाते हैं कि द फ्रीक्वेंसी बिकम्स आलमोस्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो बन जाता है। एंड इन दैट लिमिटिंग केस, ये हम पिछली स्लाइड पे बात की है कि जब आप टी को इन्फिनिटी पे ले जाएं तो आपका जो पीरियाडिक सिग्नल है, जो इस वक्त पीरियाडिक आपको नज़र आ रहा था पिछली स्लाइड पे, अगर आप टी को इन्फिनिटी अज्यूम कर लें तो वो ए पीरियाडिक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फिनाइट डोमेन में उसकी जस्ट वन वैल्यू है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सो दैट रिजेंबल्स एन ए पीरियाडिक सिग्नल। एंड इन दैट लिमिटिंग केस ये जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये फ्रीक्वेंसी में इतनी क्लोज सैंपल्स हो जाते हैं कि दिस बिकम्स कंटिन्यूस इन फ्रीक्वेंसी। सो इन दैट लिमिटिंग केस व्हेन t tends to infinity, this thing is called Fourier transform representation instead of Fourier series representation, and that is valid for both periodic signals as well as aperiodic signals. Okay, so this is the definition of the Fourier transform. X of j omega, which is the Fourier transform of signal xt. This is xt multiplied with e raised to power minus j omega t dt and an integral from minus infinity to plus infinity. जो भी आपका given signal है xt, aperiodic signal for example, उसको आप e रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करते हैं एंड यू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सो दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफ जे ओमेगा इज कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल x of t. Similarly, x of t, which is inverse Fourier transform of x j omega, so that you can obtain by multiplying this x j omega with e raised to power j omega t and integrating from minus infinity to plus infinity over d omega and 1 upon 2 pi से हम इसको divide करते हैं. So this is xt from x j omega. So this equation, the first equation, gives us the Fourier transform ऑफ xt. अगर आपके पास सिग्नल xt है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ j ओमेगा आप मालूम करना चाहते हैं तो दैट इज डिफाइंड by this equation, and this thing is defines the inverse Fourier transform. If originally you have x of j omega and you want to determine x of t from here, so x of j omega से आप x of t इस relationship से मालूम कर सकते हैं. Now let's take an example. Let's suppose we have a signal xt is e raised to power minus at ut. हम इसका
फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो मालूम करना चाहते हैं। सो लेट्स फर्स्ट सी कि ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू टी जो है ये किस टाइप का सिग्नल होगा। ठीक है, यू टी का आपको पता है, यू टी जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक वन होता है। यू टी को अगर मैं ड्रा करूँ तो वो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक वन होता है। ठीक है, ये यू टी है आपके पास। और ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू टी का मतलब क्या होगा, चूंकि ये यू टी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़ीरो से पहले तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। सो ज़ीरो पे इसकी वैल्यू ई रेज टू पावर ज़ीरो वन होगी, और उसके बाद जैसे जैसे आप टी को इंक्रीज करते जाएंगे ये डिक्रीज होता जाएगा, बट इट विल एग्जिस्ट अप टिल इन्फिनिटी। ठीक है, ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू ज़ीरो होगा इन्फिनिटी पे जाके, व्हेन टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस इज बेसिकली ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू टी। अगर हम इसको यू टी से मल्टीप्लाई ना करते तो ये फिर दोनों साइड्स पे एग्जिस्ट करता, इधर भी एग्जिस्ट करता और इधर भी अगर सिर्फ ई रेज टू पावर माइनस ए टी हो तो वो आपके पास दोनों साइड्स पे टी की दो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों किस्म की वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है। लेकिन चूंकि हम इसको u ऑफ t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड इट एग्जिस्ट अप टिल प्लस इन्फिनिटी। सो फर्स्ट थिंग विच यू शुड नोट अबाउट दिस सिग्नल इज दैट दिस सिग्नल इज अपीरियोडिक। ये सिग्नल पीरियाडिक नहीं है, ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। सो दिस इज एन अपीरियोडिक सिग्नल। सो इस अपीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम मालूम करना चाहते हैं। सो इस अपीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करने के लिए हमारे पास ये रिलेशनशिप है। इट्स एक्स ऑफ जे ओमेगा इज डिफाइंड एज एक्स टी इज ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू टी एंड मल्टीप्लाइड विद ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी। ओरिजिनली ये समेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, लेकिन यहाँ पे हम ज़ीरो से इन्फिनिटी यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये सिग्नल u ऑफ t से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि ज़ीरो से पहले ख़ुद ज़ीरो है। तो अगर आप इस समेशन को माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक जो इसका पोर्शन है उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा सिग्नल ज़ीरो है। जहाँ पे सिग्नल ज़ीरो होगा तो ज़ाहिर है उसको तो उस पर इंटीग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी तक ये एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से हमने इसकी लिमिट जो ली हैं वो ई रेज टू पावर ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक ली हैं। ई रेज टू पावर माइनस ए टी को ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। यू ऑफ टी को क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि u ऑफ t जो है दैट इज़ वन। सो अगर आप वन यूज़ करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ई रेज टू पावर माइनस ए टी ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। इसका जब आप इंटीग्रेट करेंगे और ये लिमिट्स पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस थिंग, एक्स ऑफ जे ओमेगा इज़ वन अपॉन a प्लस जे ओमेगा। सो दिस इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल x ऑफ t। और ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपके पास जो इस सिग्नल x ऑफ t का आया है, that is a complex quantity. It has a real part, it has an imaginary part. So कोई भी complex quantity अगर आपके पास है तो उसके दो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, या दो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आप मालूम कर सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट ये है कि आप इस complex quantity का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ सम नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस जे बीटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। सो यहाँ पे भी इसी तरह से आप एक्स ऑफ जे ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे दैट विल बी वन अपॉन ए स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर अंडर रूट। और दूसरी चीज़ जो आप मालूम कर सकते हैं दैट इज़ द फेज़ रिस्पांस, द फेज़ ऑफ दिस एक्स ऑफ जे ओमेगा। और फेज़ की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ इमेजनरी पार्ट टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। ठीक है, ये माइनस का साइन इस यहाँ पे इस वजह से है कि बेसिकली ए प्लस जे ओमेगा रेज टू पावर माइनस वन इसको लिखा जाएगा, क्योंकि जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ए प्लस जे ओमेगा माइनस वन लिखा जाएगा। ठीक है, सो माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा ओवर ए इज़ द फेज ऑफ दिस क्वांटिटी। सो ये जो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम किया, और अक्सर केसेस में जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करेंगे, इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड पार्ट एंड इट विल हैव अ फेज पार्ट, और इनको अलग-अलग हम प्लाट भी करते हैं। मैग्नीट्यूड को अक्सर हम अलग प्लाट करेंगे, फेज को जो है वो हम अलग से प्लाट करेंगे। सो ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड प्लाट है, एक्स ऑफ जे ओमेगा मैग्नीट्यूड इज़ वन अपॉन ए स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर अंडर रूट। ये हमने उसे फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा प्लाट किया हुआ है। जैसे ही आप ओमेगा को इंक्रीज़ करेंगे तो चूँकि ये ओमेगा
के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर बेसिकली, और उस प्लस ए स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो ओमेगा के इंक्रीज करने से ये मैग्नीट्यूड जो है ये डिक्रीज होता जाएगा, इस साइड पे भी और इसी तरह से इस साइड पे भी, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर है तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी और ये पॉजिटिव रिजल्ट विल रिमेन सेम। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे। जब आप ओमेगा को 0 पुट करेंगे तो x ऑफ j 0 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, so 0 square is 0, so 1 upon a square under root which is 1 upon a, so 0 पे इसकी वैल्यू 1 upon a है, और इसके बाद दोनों साइड्स पे गोइंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी और गोइंग टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू जो है विद इंक्रीजिंग ओमेगा ये मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। So this was the magnitude response, and similarly you can plot the phase response for this, and phase response is defined by this minus tan inverse of omega over a. So if you will put different values of omega तो उसके साथ ये phase response आपका accordingly change होता रहेगा। Okay, here is another example in which we have, this is example 4.2 in your book. In this case, our xt is defined like this, e raised to power minus at, and it is not being multiplied with unit step function. So this function exists both for negative t as well as positive t. So we have to determine the Fourier transform for this particular signal. So we put this signal in the definition of Fourier transform, which we have defined already, x of t e raised to power minus j omega t dt. So our x of t is this, e raised to power minus a absolute value of t. So what we can do that, we can convert this integral which is from minus infinity to plus infinity into two integrals. One integral from minus infinity to 0, in which we have e raised to power at, because here in this range, in this range t is negative, so already we have a negative sign, so that become e raised to power plus at, e raised to power minus j omega t, and in this range when t is positive, this will become e raised to power minus at. So we have converted it into two integrals, one integral from minus infinity to 0, another one from 0 to plus infinity, and if we solve them and put the limits from here, we will get, from this integral we will get this term 1 upon a minus j omega, and from this integral we will get 1 upon 1 plus a j omega. When we simplify them, we will get this x of j omega is 2a over a square plus omega square. So this is the Fourier transform for this particular signal, and in this case we don't have any imaginary part, so this imaginary part is equals to 0, which means there is nothing like phase response or delay or something like that. This only x of j omega is real number with its imaginary part equal to 0, and its value is 2a over a square plus omega square. We can plot this x of j omega for various values of omega. For example, when omega is equals to 0, this would be 2a divided by a square, which means 2 divided by a, that's its maximum amplitude. When omega square will be equals to, when omega will be equals to a, omega square will be a square, so this will be 2a over 2a square, which means 1 over a basically. So this point is 1 over a on both sides, whether omega is plus a or omega is equals to minus a. So this way, this is the Fourier transform for this particular signal. Another example, which is 4.3 in your book, we have to compute the Fourier transform of this signal, which is impulse function. So when we compute the Fourier transform of this impulse function, this impulse function, remember that this only has one value around t is equals to 0 in the time domain, but its Fourier transform is 1 for all frequencies. So if we plot this, the Fourier transform of this particular signal, so this is 1 for all frequencies, this is constant. So all the frequency components are present in this signal, which is
the Fourier transform of impulse function. So although impulse function exists only for a finite amount of time, yet its Fourier transform contains all the frequency components. So contribution of all frequencies is there. Okay, the next example is this rectangular pulse जहाँ से हमने start किया था वो हम basically उस केस में जो है वो बात कर रहे थे कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर पल्स जो है वो पीरियाडिक हो तो उस केस में हमने कोफिशिएंट्स मालूम किए थे पहले भी एग्जांपल में. सो नाउ दिस इज अ सिग्नल व्हिच इज अपीरियाडिक. सो there is only one occurrence of this signal and it is non-zero from say some minus capital T1 to plus capital T1. So if we find the Fourier transform of this signal, this Fourier transform will be a sinc function. Rectangular pulse का जो Fourier transform है that would be a sinc function and it will exist for various values of omega. Sinc function के बारे में already we have discussed. The last example is where we have x of j omega. So now we have a rectangular pulse in the frequency domain. Previously we were having a rectangular pulse in the time domain, but now we have a rectangular pulse in the frequency domain, and we want to find the equivalent signal in the time domain. So from x of j omega we want x of t, which is the inverse Fourier transform of this signal. So inverse Fourier transform of this rectangular pulse, if we calculate, that would be a sinc function in the time domain. So in the previous example we saw that if we have a rectangular pulse in the time domain, its Fourier transform will be a sinc function. And now if we have a rectangular pulse in the frequency domain, its inverse Fourier transform or its time domain counterpart will be a sinc function. So these are basically called Fourier transform pairs. यानी कि आप एक डोमेन से जब दूसरी डोमेन में जा रहे हैं तो एक सिग्नल एक डोमेन में अगर रेक्टेंगुलर पल्स है तो दूसरी डोमेन में जो है वो सिंक फंक्शन होगा, और एक डोमेन में अगर वो सिंक फंक्शन है तो दूसरी डोमेन में वो रेक्टेंगुलर पल्स होगा. सो दिस वाज टुडेज लेक्चर. आज हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है और कुछ एग्जांपल्स की बात की है. इंशाल्लाह ज़्यादा डिटेल से हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.